Find the range of values of real number x for which the inequality x plus 2 multiplied by x plus 5 is greater than 40 holds. So हमको यहाँ पर x की वो वैल्यूज लेनी है जो इस इनइक्वालिटी में पुट करने पर हमको ग्रेटर देन 40 की वैल्यू दे. So first we are going to solve this inequality. X plus 2 x plus 5 is greater than 40. So solving these two, we will have x square plus 7x plus 10 is greater than 40. और ये 40 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव का 40 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 40 plus 10 will become minus का 30 is greater than 0. Now doing the middle term splitting, we will have x square plus ऐसे कोई दो नंबर जिनको ऐड करने पर 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 30x स्क्वायर आए. These two number will be प्लस का 10x and minus का 3x minus का 30 is greater than 0. Now pairing them up, first taking out the common x plus 10 and minus का 3 common आ जाएगा, x plus 10 is greater than 0. Now doing the pairing, x minus 3 and x plus 10 is greater than 0. Okay, now we know that कि x minus 3 and x plus 10 हमारे दो सॉल्यूशन होंगे जब minus 3 राइट हैंड साइड जाएगा और प्लस 10 राइट हैंड साइड जाएगा. सो माइनस 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव का 3 और प्लस का 10 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस का 10. सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस. सो हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. सो द नंबर लाइन विल हैव माइनस का इंफिनिटी एंड पॉजिटिव का इंफिनिटी. we gonna make the number line first. Now plotting these two solutions, we will have minus का 10 and positive का 3. Okay, now we are going to see the region for which this is a positive outcome. So first we are going to see this region from minus 10 to positive 3, and if we pick 0 as one of our coordinate, so let's see कि x is equals to 0 put करने पर क्या outcome आता है. So 0 minus 3 will be minus 3, which is a negative outcome, and 0 plus 10 will be a positive outcome. So negative into positive will be a negative. So this will be a negative region, and going alternatively we can say this is a positive region as well as this is a positive region. Now in equation we are seeing कि हमको यहाँ पर positive region चाहिए. So the positive region will be minus infinity to minus 10. Now we can see that ये positive region चाहिए, but यहाँ पे greater than equals to का sign नहीं है, there is the only sign of greater than. So we are going to use this bracket union 3 to infinity. So this is our answer. But if we can see A, B, C, D इनमें से किसी भी ऑप्शन के अंदर ये आंसर नहीं है. In A we have minus infinity to positive 10, but our answer is coming as minus infinity to minus 10. So A भी हमारा आंसर नहीं होगा. Hence we can say कि E is our only correct option. So nota is the correct answer for this question.